देखा वो कल किसी और से फिर से बात कर रहा था और मेरे पूछने पर उसने इग्नोर कर दिया हमेशा की तरह। सो ही स्वेप्ट इट अंडर द रग लाइक ऑलवेज। स्वेप्ट इट अंडर द रग? क्या बोल रही है तू? अरे इट्स एन ईडियम, मतलब मुहावरा है। ओह अच्छा। स्वेप्ट इट अंडर द रग का मतलब होता है किसी इशू को एकदम इग्नोर कर देना। क्या आपको भी ऐसे इंग्लिश ईडियम्स अपनी डेली लाइफ में यूज करने हैं? तो आज की वीडियो में हम 15 न्यू एवरीडे यूज इजी इडियम्स सीखेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। हाय गाइस, आई एम आरुषि, योर इंग्लिश एजुकेटर, एंड आज की वीडियो में हम एक कॉन्वर्सेशन के एग्जाम्पल से हर एक ईडियम का मीनिंग समझेंगे ताकि आप भी इन्हें फ्लुएंटली यूज कर सको एंड यू साउंड लाइक समवन हु इज फिनोमिनल विद देयर लैंग्वेज स्किल्स। So let's begin. Hi Sneha, मेरा तुमसे मिलने का इतना मन था ना, but I was feeling under the weather. That's why I was thinking to cancel it. Under the weather का मतलब होता है कि आपकी तबीयत थोड़ी सी खराब है, so that is feeling under the weather. Example, I was feeling under the weather, so I didn't go to office today. Oh no, I hope you feel better soon, Priya. And it's so weird that we've known each other for only a week. Do you want to talk about something to break the ice? Break the ice इस idiom का मतलब होता है कि कोई बात शुरू करना किसी मीटिंग में, किसी पार्टी में, किसी गैदरिंग में, ताकि सब लोग कंफर्टेबल हो जाएं। Example, at the party, Sanya told a funny joke to break the ice. Sure. Do you remember I was planning to buy that iPhone? Well, it costs an arm and a leg, but I think I'll go for it. Costs an arm and a leg हम ये तब बोलते हैं अगर कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव हो, महंगी हो। Example, the designer bag cost me an arm and a leg. Great, it's a big decision. Have you wrapped your head around all the features? Wrap your head around something का मतलब होता है किसी मुश्किल कॉम्प्लिकेटेड चीज़ को समझना। Example, it took me a while to wrap my head around the new software. Not yet. I need to do my research, check reviews. I'll take my time. I don't want to jump the gun. Jump the gun का मतलब होता है किसी चीज़ को बहुत ही पहले जल्दबाजी में शुरू कर देना, to start something too soon. Example, he jumped the gun by announcing about the project before it was approved. Sure, you know you can kill two birds with one stone by selling your old phone to help you pay for your new one. Kill two birds with one stone का मतलब होता है to accomplish two tasks with one action. जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, एक तीर से दो निशाने। Example, cycling to work saves me money and I get to exercise also. Killing two birds with one stone. That is so smart. I may just do that. Speaking of decisions, I have a secret, but I don't want to let the cat out of the bag just yet. Let the cat out of the bag का मतलब होता है to reveal a secret by mistake, गलती से secret share कर देना। Example, she let the cat out of the bag by telling everyone about her engagement. Now you've got me curious. You can spill the beans whenever you are ready. Spill the beans का मतलब होता है to reveal a secret. Example, don't tell Sanya about it. She always spills the beans. Maybe later. I just realized I have a big exam coming up, so I need to hit the books tonight. Hit the books का मतलब होता है to study very hard. Example, I need to hit the books for my upcoming math exam. Oh, good luck. I'm sure it will be a piece of cake for you. Piece of cake का मतलब होता है something that is very easy to do. For example, the exam was a piece of cake. I finished it in just 20 minutes. Sure, after that I'm planning to go on a weekend trip because exams are like once in a blue moon. Once in a blue moon का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ही ज़्यादा rare हो, something that happens very rarely. Example, he visits us once in 2 years. That is like once in a blue moon. Sounds like a plan. Hey, let's make sure we are on the same page about our weekend plans. ऑन द सेम पेज का मतलब होता है किसी एक चीज़ पर अग्री करना एंड टू हैव द सेम अंडरस्टैंडिंग। एग्जाम्पल, लेट्स मेक श्योर वी आर ऑन द सेम पेज बिफोर वी स्टार्ट द प्रोजेक्ट। श्योर, इफ समथिंग कम्स अप लेट मी नो, द बॉल इज इन योर कोर्ट। द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब होता है अब तुम डिसाइड करो क्या करना है। इट इज़ योर डिसीजन टू मेक। एग्जाम्पल, I have done all I could. Now the ball is in your court. Will do. Time to bite the bullet and finish some pending work before I crash. Bite the bullet का मतलब होता है to finally decide to do something difficult that you have been delaying or hesitating to do.
For example, I have been delaying my maths classes, but this time for the attendance, I'll have to just bite the bullet. Definitely, let's call it a day. Take care of yourself and let's catch up later properly. Call it a day means to stop doing something. For example, once the report was over, I decided to call it a day. This conversation shows how you can start using these idioms into your easy everyday conversations. मुझे comment करके अपना favorite idiom बताओ with a sentence. And I hope आपको आज की वीडियो अच्छी लगी. Subscribe for more communication improvement and personality development content. I will also keep guiding you in your journey of becoming fluent in English, and share this video with a friend who will love using these idioms, and I will see you in my next one.